hemisphere, hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. Yes, anyone? How to do this question? Please tell me. I'll just be giving the hint and then we can start with quadrilaterals. Yes, anyone? If we are having a hemispherical tank, okay, made up of iron sheet, 1 We centimeter will add thick. 1 centimeter to inner radius to find the outer radius. Exactly. Okay. It is given over here that the inner radius is 1 centimeter. That means this much is 1 centimeter. 1 meter. Okay. 1 meter. Inner radius is 1 meter and it is 1 centimeter thick. That means convert it in, like both in same unit, and then only you will be able to do the calculation. Okay, the thickness is 1, inner radius is given. Okay, due to the thickness, inner radius and outer radius will be different. Are you understanding? Due to the thickness, inner radius and outer radius will be different. Okay, that's why the inner radius is given as a 1 meter. What we have to find? See, outer radius you will be able to find when you will add this 1 centimeter with this 1 meter. Maintain the unit. Okay, both must be in same unit. Either you keep both in centimeter or you keep both in meter, whatever. If we will keep both in centimeter, so 1 meter is 100 centimeter. तो इनर रेडियस, हमारा जो इनर रेडियस है इस हेमिस्फीयर का वो क्या है 100 सेंटीमीटर है, और थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर थिकनेस है. मतलब आउटर रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. एवरीवन गेटिंग इट? एवरीवन गेटिंग इट? Yes or no? Yes, Okay. ma'am. So outer radius we are able to find. Now what we have to find here? Find the volume of iron used to make the tank. Okay. What is the volume of the iron that has been used to make the tank? मतलब कैसे find करेंगे volume? Anyone? Yes, ma'am. How will be finding the volume of iron used to make the tank? Ma'am, 4/3 pi r pi bracket r radius of outer surface minus radius of inner surface. Yes. सी हम क्या करेंगे, पूरे जो आउटर रेडियस अभी हमने फाइंड किया उससे हमें क्या मिलेगा, पूरा जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना ऑक्यूपाई करेगा. ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी. और जो हमारा इनर इनर रेडियस हमारे पास है दैट इज 1 मीटर, इससे भी हम एक वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं जो कि इनर वॉल्यूम है. आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें ये जो आयरन यूज हुआ है इस टैंक को क्रिएट करने में इसका वॉल्यूम मिल जाएगा. आ रहा है समझ में? आउटर आउटर रेडियस को यूज करके आउटर वॉल्यूम क्रिएट फाइंड करेंगे और वहां से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली ये जो थिकनेस है सिर्फ इतना वाला, ये कितना आयरन यूज किया गया है इस टैंक को क्रिएट करने में, दैट विल बी एबल टू गेट. Everyone getting me? That's what he said, that we'll be taking 4/3 pi r cube
minus 4 by 3 pi, the smaller one, r cube. 4 by 3 pi we can take out common, and basically it will be r, the capital R cube minus small r cube. Am I making sense to all of you? कैसे Yes, फाइंड ma'am. करेंगे? ये जो पूरा टैंक है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। मतलब ये आयरन के साथ साथ पूरा जो आउटर आउटर रेडियस को लेके जैसे ही हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें ये जो आयरन यूज हुआ है वो भी वॉल्यूम में आ जाएगा, और जो इसका कैपेसिटी है वो भी वॉल्यूम में आ जाएगा। और अब इनर रेडियस को लेके वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जिससे हमें क्या पता लगेगा? सिर्फ उसका कैपेसिटी पता लगेगा। इसीलिए आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें सिर्फ आयरन वाला वॉल्यूम रिजल्टेंट मिल जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? आई एम explaining it one more time. See, we are having a tank like this. Okay. अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया आउटर रेडियस लेके, जिसमें हमने क्या किया था? 100+1 यहाँ से रेडियस फाइंड किया था। अगर इस रेडियस को लेके हमने वॉल्यूम फाइंड किया, तो इस वॉल्यूम में क्या इंक्लूडेड है? आयरन जो यूज हुआ है वो भी इंक्लूडेड है, और ये जो टैंक का कैपेसिटी है, कितना लिक्विड ये ऑक्यूपाई करेगा, ये दोनों वॉल्यूम निकल के आ जाएंगे। अब इस टैंक में क्या है? थिकनेस है। जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ। कैन यू सी द थिकनेस ओवर हियर? कैन यू सी? कैन यू सी द थिकनेस ओवर हियर? Yes or no? Is it visible to all of you? Can you see the thickness? Can you see? It's not visible. Can you see the thickness? Can you see it? How the different radiuses we are having? Can you see? It's thicker. Can you see it? Yes, ma'am. बाहर वाला सर्कल जो है और जो अंदर वाला सर्कल है, दोनों डिफरेंट है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ऐसा ही कुछ दिख रहा है हमारा हेमिस्फीयर। ओके। तो इसीलिए अगर हमने पूरे सर्कल को कंसिडर कर लिया, ध्यान से देखो इस फिगर को, अगर हमने पूरा सर्कल कंसिडर कर लिया, ओके, वॉल्यूम यू गॉट आल्सो ग्रेट। अगर हमने पूरा सर्कल कंसिडर कर लिया, इसमें क्या हम ले रहे हैं? ये जो थिकनेस है, आयरन जो यूज हुआ है, ये भी हम ले रहे हैं, और इसका जो कैपेसिटी है वो भी मिल जा रहा है हमें। किससे? जैसे ही हम आउटर रेडियस यूज कर रहे हैं, और जब हम इनर रेडियस यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर इनर रेडियस यूज करके अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इनर वॉल्यूम अगर फाइंड करें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी मिलेगा कि ये कितना लिक्विड ऑक्यूपाई करेगा। अब बताओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें आयरन का वॉल्यूम मिलेगा? आया ना? Yes, ma'am. Yes, Afreen has got the answer as well, and she has got 0.0634809 meter cube. Note it down. 0.0634809. Check it at your home. Are you getting the same after subtracting both the volumes? Okay, then we are done with this one. 2, 3 more questions are there which you will be able to do. Have you deleted that, Afin? Yes, ma'am. I had made mistake in that. Okay, I thought why it disappeared from this tree. Okay, rest of the student, please do it by yourself. Okay, let me know the answer in the next class. We'll be starting quadrilateral student. Concept you all understood, right? कि हमें Yes, करना ma'am. क्या है? Okay.
Afreen, Rayan, you two And got it. triangle But region. triangle chapter we have discussed over. Yes, Rayan, what you wanted to say? And triangle chapter is over. Yeah, and quadrilateral we are going to start. It is it is based on triangle only. The complete chapter is based here. Everywhere we'll be using the concept of triangle. So if triangle is not clear, then quadrilateral will not make sense. Today I'll be starting anyway quadrilateral, just the introduction. Make sure before the next class you are having one extra class. Inform our team today only. I'm saying to Ryan, Okay. Bharti and anyone from here, जिससे भी लगता है कि मेरा ट्रायंगल चैप्टर उतना क्लियर नहीं है, प्लीज मेरे And I टीम was को not there. इन्फॉर्म करो. Yes, Ryan, please inform our team that you need extra class on triangle. Okay, Okay. Ryan, you, Bharti, you, of course, and because you was not there, because this chapter completely is based on this quadrilateral. I'll not be explaining anything else, just the property of parallelogram, property of trapezium, rectangle, square, rhombus, and after that we will start solving the question based on triangle concept. ट्रायंगल चैप्टर का कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर समझने के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम सिर्फ ट्रायंगल का कंसेप्ट ही यूज करने वाले. However, if I'll be starting the introduction today, then you will be understanding, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. So today it will make sense to you, but when we will start solving the question, then you will start getting puzzled. Okay, so make sure before the next class you are joining here with after having one extra class. Okay, today only go and inform our team. All the student, whoever, like anyone who think that maybe triangle is not that clear. Okay, so we are going to start quadrilaterals. Yes, Ryan, any triangle you have not done, and what else apart from that, all the chapter till triangle, is it finished? Yes, that I know. Okay, so please In inform. triangles, I know side angle side, angle side angle. I have to do RHS. Okay, so if you understand side angle side and everything, then RHS also you will be understanding. Okay, it's not that different. It's exactly like the previous criteria. So even I explain in class, then I don't separate the class that आज के क्लास में सिर्फ साइड वाले क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे हमने नहीं किए. हमने एक ही साथ सारे सारे क्राइटेरिया लिखे और जहाँ पे भी जो क्वेश्चंस में आ रहा है, और मैंने क्वेश्चंस भी मिक्सअप कर दिए थे. The books question, extra question I had taken, and wherever कभी RHS, कभी SSS, कभी SAS, हमारे questions में जो भी criteria मैच करता था हम वही यूज करते थे. ओके, तो अगर Okay. और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तुमसे तो RHS भी हो जाए. ओके, it's not different. Okay. Still if you are not sure, then please inform the team. Okay, they'll be arranging class. Okay. So quadrilateral. Today we are going to discuss about quadrilaterals family tree. Okay, where the head of the member is quadrilateral. Now the first generation is trapezium, parallelogram, and height. You will not be getting any question based on height. But since it's a quadrilateral, I am taking it in the quadrilateral family. Now parallelogram is having its own family. That's rectangle and rhombus. And rectangle and rhombus both combined together is generating one polygon, that is square. Okay,
Okay, so this is how we are having quadrilaterals family tree. Okay, you must have created your own family tree. Your head of the family member is sitting at the top, then the first generation, then your generation, like that. So whatever property this quadrilateral will be having, okay, each and every family member will follow the same property. Okay, here isosceles trapezium especially will be discussing. That means I want to say whatever is the quality or property of the quadrilateral, each and every family member of course will follow those properties. And apart from that, each and every family member will be having their specific property also. If I am saying quadrilateral is a polygon having four sides where sum of all the interior angle is 360 degree, this is applicable for all the quadrilateral. Trapezium also, it's a quadrilateral. Okay, it's a four-sided polygon where sum of all the interior angle is 360. Parallelogram also a polygon, four-sided polygon where sum of interior angle is 360. Kite also four-sided polygon, sum of all the interior angle is 360. Okay, same for isosceles, same for rectangle, same for rhombus, same for isosceles. तो अब से मैं अगेन एंड अगेन ये नहीं बताऊंगी कि क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है तो ऑफ कोर्स ट्रेपेजियम इसे फॉलो करेगा. अब मैं ये नहीं बताऊंगी, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का है वो ट्रेपेजियम तो ऑफ कोर्स फॉलो करेगा ही. इसके अलावा ट्रेपेजियम का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज क्वालिटीज भी होगा. सिमिलरली जो भी प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का होगा, पैरेललोग्राम इज गोइंग टू फॉलो दैट ऑफ कोर्स. Okay, apart from that, parallelogram will have few specific properties or qualities. ऐसे ही जो भी प्रॉपर्टी है पैरालेलोग्राम के, रेक्टेंगल वो प्रॉपर्टीज तो ऑफ कोर्स फॉलो करेगा क्योंकि रेक्टेंगल केम फ्रॉम पैरालेलोग्राम फैमिली. तो rectangle will follow everything, all the property whatever is valid for parallelogram. And apart from that, rectangle का कुछ specific properties भी होगा. Similarly for rhombus, similarly for square. तो आज के बाद से अगर मैं बोलूं rectangle is a parallelogram तो कंफ्यूज मत होना. yes, rectangle is a parallelogram. सबसे पहले तो rectangle parallelogram ही है, उसके बाद कुछ स्पेशल क्वालिटीज है उसके अंदर जिसकी वजह से उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उस पैरालेलोग्राम का स्पेसिफिक नेम है और दैट्स कॉल्ड rectangle. Getting it? From now onward I am going to say that rhombus is a parallelogram. Why? Because of course it came from parallelogram family. It will follow all the properties of parallelogram. And since it is having few extra qualities due to that, again the new name that is rhombus. Am I making sense to all of you? Yes, ma'am. Okay. Parallelogram is a quadrilateral. Trapezium is a quadrilateral. Kite is a quadrilateral. Isosceles, trapezium, rectangle, rhombus, square, these all are quadrilateral. ओके, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों ये क्वेश्चन में लिखा है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम तो कोई और शेप है, रोम्बस तो कोई और शेप है. ये दोनों को मिक्स हम कैसे कर रहे हैं? मिक्स नहीं कर रहे हैं. रोम्बस कहाँ से आया? पैरेललोग्राम से आया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट इज quadrilateral is a four-sided polygon where sum of all the interior angle is 360 degree. Let's see why the sum of all the interior angle is 360 degree. So sum of all interior angle, you don't have to prove it, but you should know it from where it came. Sum of all interior angle of a quadrilateral is 360 degree. Suppose we are having a quadrilateral ABCD. If you will divide this quadrilateral into triangles like this, I'm talking about triangle ABD and triangle BC. So in triangle AB, can we say that sum of all the interior angle, this angle, this angle, this angle, this angle,
all added together will be 180 degree. Can we say that? Can we? Yes, Of ma'am. course, angle sum property of a triangle says that sum of all interior angle in any triangle it will be 180, and in the other triangle also BCD, sum of this angle and this angle it will be 180. That means, do we want to say that sum of all the angle A, B, C, completely C and completely D will be 360? Yes, it will be. Are you getting it from here? Yes, ma'am. Everyone getting it from here? Everyone getting it from here? We are having a quadrilateral ABCD. हमने क्या किया? हमें क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री. कैसे 360 डिग्री आया? हमने क्या किया? इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब हम ये कह रहे हैं कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 180 डिग्री. ओके, हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो सारे एंगल्स का सम 180 होना ही चाहिए. और हम क्या कह रहे हैं? z प्लस k प्लस t, ये तीनों एंगल का सम भी क्या है? 180, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है. अब बताओ, ये पूरा एंगल a दैट मींस x. नाउ कैन यू सी फ्रॉम हियर दैट इज this x completely, this b completely, that means z plus t, this c completely, that means k, and this completely. If I will add all of them, are we going to get 360 degree? Yes or no? Yes, ma'am. Everyone is getting it? Please confirm, are you getting it? Yes, ma'am. अगर हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया तो हमें 360 डिग्री मिलेगा, और वहां से हम क्या ये कह सकते हैं ए बी सी डी 360. Just a second. Let me call by name. Samya, Hanan, Bharti, Afreen, are you getting it? Yes, ma'am. So we are getting sum of all interior angle in a quadrilateral, it's 360. कैसे हमें पता चला? जैसे ही हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड किया वहां से हमें मिला. और जब भी हम ऐसे दो ट्रायंगल में किसी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स में, तो उस प्रोसेस को ट्रायंगुलेशन कहते हैं. Basically this one will not come, but who knows? If it will come, it is very simple. It is very simple. You should be able to do it by yourself. Okay, now in this chapter basically we will be completely, most of the question is based on this parallelogram. Okay, and trapezium is also there, but kite, we will be discussing the property of kite, but that you will never see in any of the questions. Just since it came from quadrilateral family, that's why I have kept it over. So trapezium first. Trapezium is such a quadrilateral. ट्रेपेजियम, सबसे पहले ट्रेपेजियम की बात करते हैं. पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या. आई एम राइटिंग इट ओवर.
Okay, the properties of trapezium. Trapezium कहाँ से आया? It came from quadrilateral family. Okay, trapezium is such a polygon having four sides. Sum of all interior angle is 360. That we already know. But in trapezium, there is a pair of there is a pair of parallel sides. Okay, PQ is parallel to SR. Only a pair, only one pair of parallel sides we are having in trapezium. That's called basis of the trapezium. This is called base PQ. This is called base RS. And the other two sides which is not parallel, that those are called legs of the trapezium. Okay, so the special quality of trapezium is special quality is in trapezium. Write it. There is a pair of parallel sides. That is PQ is parallel to SR. Okay, that's it. Only this quality we are having in trapezium. And since PQ is parallel to SR and PS look like a transversal, can we say that this angle and this angle sum will be 180 degree? Can we say that if PQ is parallel to SR and there is a transversal like this, can we say that this angle and this angle sum will be 180? Yes or no? Can we? Can we say that the sum will be 180 degree? Yes, ma'am. Right? Co-interior angle or interior angle on the same side of transversal. Because PQ and SR, these two are parallel with each other and PS is the transversal. So of course, angle P over here and angle S over here, the sum will be 180, right? I'm going to Yes, write it. ma'am. Similarly, I'm going to write it apart from this property number 1. Another property is since PQ is parallel to SR, okay, angle P plus angle S is 180. Okay, interior angle on the same side of transversal. And angle Q plus angle R is 180. And that's it. Okay, these are few special qualities of trapezium. Shall I scroll down? Yes, can I scroll down? Is it clear so far to everyone? Am I audible? Yes, Afreen, Bharti, Hanan, Ryan. Yes, Yes, ma'am. Samya. Okay, let's continue. Next one is in trapezium we were having one more branch, that was isosceles trapezium. Now isosceles trapezium will follow all the property of trapezium. I am not going to write it. Whatever I have written for trapezium, everything will be followed by isosceles trapezium since it came from the trapezium family. Okay, what is that special extra feature that I'll be mentioning over here? Okay, the special feature is since the name is isosceles and isosceles triangle means we understand two sides of a triangle are same. So since it is a isosceles trapezium, here what will be same? Here legs of the trapezium will be same length.
Okay, here legs of trapezium are equal in length. जो साइड पैरेलल है वो इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। जो साइड पैरेलल नहीं है वो इक्वल होगा। ओके, क्योंकि जो साइड पैरेलल है अगर वो इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा कि अपोजिट साइड एक पेयर है, अपोजिट साइड का जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऐसा प्रॉपर्टी सिर्फ पैरेललोग्राम का होता है कि एक पेयर है अपोजिट साइड का जो कि आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इवन इफ अभी हम दूसरे दो साइड्स का बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास पॉलीगन है, फोर साइडेड पॉलीगन, जिसमें अपोजिट साइड्स एक एक ऐसा पेयर है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और जैसे ही मैंने बोला वो इक्वल भी है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो साइड पैरेलल है वो सेम नहीं है लेंथ में। जो साइड पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, लेग्स इज नॉन पैरेलल साइड्स। That means AD is equals to BC. Is it clear? Is it clear to all of you? ये Yes, extra ma'am. special, this is the special feature of isosceles trapezium. Again I am repeating all the properties of trapezium, whatever I have written just now above, that will be followed by this isosceles trapezium, let me tell you. Okay, let's move now parallelogram, which is very 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 important. Okay, parallelogram we'll be discussing. So parallelogram is a four-sided polygon. The name is quadrilateral. Sum of interior angle will be 360 degree. What else? That we are going to discuss. Okay. What is that? It's extra special feature of parallelogram. So suppose we are having ABCD and it's a parallelogram. Here opposite side will be parallel and will be equal in length. Okay. Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides are parallel and equal in length. That is AB is parallel to CD and AB is equals to CD also. Similarly, AD is parallel to BC and AD is equals to BC also. Only this, no, from here we are getting so many other properties also. That is this. Suppose, let me show it to you. Suppose I am drawing a line over here like this. Can you see, that this triangle number 1 and triangle number 2, this two are congruent triangle? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल congruent triangle है? क्यों? Yes, ma'am. क्यों? साइड congruency यहाँ पे आराम से वर्क कर रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, हम यहाँ पे जैसे ही मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे कि ये तो दोनों congruent triangle है। Easily we are getting by side congruency criteria. Okay, these two are congruent triangles. If these two are congruent triangles, that means angle A over here will be equals to angle C over here by CPCT. Getting it? Yes, ma'am. That's why there is a property in parallelogram that opposite angles are also equal with each other. From where it came? From congruency it came. Opposite angle are seen in a parallelogram. That is
Angle A is equals to angle C, and angle B will be equals to angle D. Why? Because I can draw the other diagonal AC and I can show you the same thing. Okay, so angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. What else? Same, just like the trapezium. Here also we are having interior angle on the same side. Can you see? Can you see that since AB and CD are parallel and there is a transversal like that, of course this angle plus this angle is 180. Okay, another transversal also, of course this angle plus this angle is 180. But apart from this, can you see here we'll be getting more pairs like this, because this one and this one are also parallel with each other and this is a transversal, so angle A plus angle B is also 180. तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल को लेंगे, ए के साथ बी सम 180 होगा, बी के साथ सी सम 180 होगा, सी के साथ डी सम 180 होगा, डी के साथ ए सम 180 होगा. कहाँ से आ रहे हैं ये सारे प्रॉपर्टी? पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से आ रहे हैं. आ रहा है समझ में सबको? Yes, ma'am. Everyone getting it? Rest of the student, are you getting it? Write it over here. Please confirm, are you getting even? Are you there even? Yes, In the parallelogram. Sum of any consecutive angle will be 180. Okay, this much only I am keeping over here. I mean, parallelogram. There can be more properties and all, which we don't need to know. Okay, we'll be proving it, we'll be checking it. That's it. Okay, now we are going to take the parallelogram family, another member, that is rectangle. Okay, so again let me remind you that rectangle came from parallelogram family. Rectangle is a parallelogram. क्यों? क्योंकि rectangle parallelogram के सारे properties follow करेगा. सबसे पहले rectangle parallelogram के सारे properties follow करेगा. Opposite side parallel, opposite side equal, opposite angle same, any two sum of any two consecutive angle will be 180. ये सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल ऑफ कोर्स फॉलो करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूंगी. मैं यहाँ पे जो रेक्टेंगल का स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर है वो यहाँ पे लिखने जा रही हूँ. रेक्टेंगल में बस एक Every ही angle will be 90 degrees. only one condition is there, each interior angle of rectangle is 90 degree. That's it. Okay, each interior angle in a rectangle is 90. प्रॉपर्टीज और भी हो सकते हैं, अगर हम बैठ के सोचना शुरू करें और क्या और क्या, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज या तो हम यूज करेंगे, अगर ये सारे प्रॉपर्टीज वर्कआउट नहीं कर रहे तब हम सोचेंगे कि और क्या हो सकता है. ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वही मैं यहाँ पे नोट डाउन करा रही हूँ. Rectangle parallelogram family से we know there is one more member, that is rhombus. What is that extra special feature of rhombus? It is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram. Opposite sides are parallel, equal. We know that. What is that extra feature, extra quality of rhombus? Who will say? Each side of rhombus are equal in length. A B B C C D D A सारे ही same length के होते हैं. ये rhombus का special quality है. Okay. Angles are also same. All sides are equal in length. And one more angles and one more extra quality is there, that is the diagonal of a rhombus are perpendicular bisector of each other.
ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किए AC एंड BD, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में कट भी करेंगे। अगर मैं यहाँ पे O नेम दे दूँ तो AO OC आपस में इक्वल होंगे, BO OD आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि ये जो डायगोनल है दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, किससे? अनदर डायगोनल से। सो आई एम राइटिंग इट इन अ सिंगल स्टेटमेंट, द डायगोनल ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर bisector of each other. Okay. Next. Next is a square, which is just the combination of rectangle and rhombus. Okay. So it will follow all the properties of parallelogram. It will follow all the property of rhombus. It will follow all the property of rectangle. मतलब यहाँ भी सारे साइड सेम है। कहाँ से इसे स्क्वायर को ये प्रॉपर्टी मिला? rhombus से। यहाँ भी ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। कहाँ से मिला स्क्वायर को ये प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल। तो आज के बाद से अगर कहीं देखना लिखा है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल तो कंफ्यूज मत होना। यस, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay. Here also the diagonal will be perpendicular bisector of each other. Yeah, these are the qualities of a square. And not like nothing extra. Okay, these are the special, like these are the qualities, these are the properties which we use while solving the question. That all sides are same and all. So I'm not writing any property. Why? Because I have already written those properties for rhombus and rectangle. So of course square will follow all those. Okay, square will follow all the property of parallelogram, square will follow all the property of rectangle, square will follow all the property of square will follow all the property of this rhombus. Okay, kite I'll be explaining in the next class. You have to keep in mind all this. Anywhere any confusion, anyone? No, ma'am. Yes, students, are No, you ma'am. having any doubt anywhere? No, ma'am.